Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें पढ़िबा अबाउट द टू न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी सो टू न्यूक्लियन जेतले एठी आछि माने न्यूक्लियस भितरे दुईटा न्यूक्लियन अछि जाकी हला गोटे प्रोटॉन आ गोटे हला न्यूट्रॉन सो अकॉर्डिंगली गोटे पढ़िबा हमें न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी आ गोटे पढ़िबा हमें प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी सो फर्स्ट न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी इट इज द वर्क needed to separate a neutron from a nucleus ओके गोटे न्यूक्लियस रो गोटे न्यूट्रॉन को सेपरेटली काढिबा पई जति की वर्क दरकार दैट इज योर न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी ओके तो सपोज एठी जेड आई हे गला आ ए आई हे गला तमरो एटॉमिक नंबर आ मास नंबर इनिशियली आ फाइनल न्यूक्लियस रो आफ्टर द सेपरेशन आसी गला ZF so obviously neutron जेहेतु कढ़ा जाउची so atomic number same ही रहइबो so ZF is equal to ZI किंतु AF एबे हि जबो AI - 1 so देखो एबे इनिशियल न्यूक्लियस ता थिला एया which is XNI NI हि गला तमरो न्यूट्रॉन नंबर प्लस SN जो आछि एटा होची तमरो सेपरेशन एनर्जी टा ओके सो एठी तमरो एबे न्यूक्लियस टा फाइनल न्यूक्लियस टा हिसाब रे आछि जोथरे कि गोटे न्यूट्रॉन कमी गला ओके दिस इज द separated neutron okay and this work can be calculated from the difference between the mass of initial nucleus and final nucleus plus the mass of neutron okay so ei jo neutron separation energy अछि ताको हमें लिखि परिबा Sn is equal to एरा जेमति कहिला this is the mass of the final nucleus plus the mass of neutron minus the mass of the initial nucleus into your c square okay अच्छा एठी ए जो separation energy Sn टा negative आसीबो so this negative value will indicate that the neutron is unbound and the initial nucleus can decay by neutron emission okay our lifetime jodi dekhiba for the spontaneous neutron decay it will be very short around 10 to the power minus 22 seconds okay thus the negative value of this Sn implicates that the limit of the existence of stable isotopes for a given Zi equal to Zf माने तमरो जो एटॉमिक नंबर टा एठी अनचेंज रहिबो ओके सो अकॉर्डिंगली ए सेपरेशन एनर्जी जोटा अछि न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी जेमति कहली ए हिसाब रे हमें इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन याकू लिखि परिबा ओके सो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट सो याकू हमें जदी आकू सॉल्व करी करी जिबा ताले देखो शेषरे हमें एटा बाइंडिंग एनर्जी आसी गला BAZ ओके सो शेषरे हमरो इन टर्म्स ऑफ योर बाइंडिंग एनर्जी याकू हमें लिखि परिबा Sn is equal to the binding energy BAZ minus binding energy BA minus 1 Z okay so এই জিনিসটাকে আউ থরে বি এটি লিখিছি দেখো নিউট্রন সেপারেশন এনার্জি এটি আমি ইয়াকু ক্যালকুলেট করি পারিবা ইন টার্মস অফ द एक्सेस मास ओके सो एक्सेस मास माने तमरो जो मास डिफेक्ट जोटा आसे सो एक्सेस मास एटा हला तमरो फाइनल न्यूक्लियस रो दिस इज ऑफ द न्यूट्रॉन एंड दिस इज ऑफ द इनिशियल न्यूक्लियस ता सहित हमें प्रोडक्ट कर देला c स्क्वायर ओके आ इन टर्म्स ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी जोटा हमें ऊपर देखिला ताकू हमें लिखि परिबा ए हिसाब रे दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इनिशियल न्यूक्लियस माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस ओके सो एठी Zi और Zf जेतु समान रहउची सपोज ताकू हमें इक्वल टू Z नै गला ताले दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इनिशियल वन दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द
फाइनल वन सो ये दुई बाइंडिंग एनर्जी रो डिफरेंस हो गला तुम न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी Sn ओके आगु बढ़िबा एई जो न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी अच्छी सपोज फॉर एग्जांपल आमे गोटे लेड रो आइसोटोप नेबा हैविंग एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 82 सो देखो एठी आमे x एक्सिस रे न्यूट्रॉन नंबर नीचु n आउ y एक्सिस रे न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी नीचु Sn इन MeV okay so accordingly tomorrow graph ta ei hisab re zigzag aschi okay and it is decaying with the increase in the neutron number okay so this is the graph next ebe jodi ei neutron separation energy dekhiba for the value of your Z equal to 82 which is the isotope of lead tale note that the neutron separation energy is larger for the isotopes with even number of neutrons ओके जो जगह इवेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थिबो सेही जगह रे बेसी रहइबो ए न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी एज कंपेयर टू दैट ऑफ हैविंग ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओके आ एटा इंडिकेट करछि जे जो पेयर न्यूट्रॉन्स अछि ऑब्वियसली न्यूट्रॉन जदि पेयरिंग हेछि ता माने स्टेबिलिटी बेसी रहउछि तेणु सेही भलिया स्टेबल न्यूक्लियस रु गोटे न्यूट्रॉन को जदि आमे काढी आनिबा बा सेपरेट करिबा को हेले हमकु बेसी एनर्जी दरकार हबो ओके सो this will result in significantly around 20% larger total binding energy per nucleon okay also I would jinso bhi note karo that the step like your change in the neutron separation energy at n equal to 126 देखो एटी ग्राफ रे हमरो n equal to जेतले 126 अछि एठी देखो जेमति गुटे कंटीन्यूअसली हमरो ग्राफटा आस्तला ओके ई भलिया कंटीन्यूअसली आस्तला किंतु जेतले अराउंड योर न्यूट्रॉन नंबर व्हेन इट इज नियरली इक्वल टू 126 एबे टिके ई ग्राफटा टिके चेंज हो गला ए जो पोर्शन रे ओके सो एटा गुटे सिग्निफिकेंट चेंज आछि अराउंड n equal to 126 so ए जो डिसकंटिन्यूटी आसिला it is indicating that there is closing of the neutron cells okay so this is about your neutron separation energy ebe देखिबा proton separation energy देखो proton separation energy भी सही बढ़िया it is the energy or work required to separate a proton from a nucleus having suppose initial atomic and mass number Zi and Ai so that the final nucleus now becomes having Zf equal to Zi minus 1 and Af equal to Ai minus 1 so accordingly our reaction jodi am in terms of equation lakhiba this is the initial nucleus this is the separation energy for the proton and this is the final nucleus ता सहित गोटे प्रोटॉन एटा सेपरेट हेकि बाहरी आछी ओके सो एठी एटॉमिक मास भी कमी जाउची बाय वैल्यू 1 आउ मास नंबर भी कमी जाउची एटॉमिक नंबर भी कमी जाउची बाय वैल्यू 1 आउ मास नंबर भी कमी जाउची बाय वैल्यू 1 so this work again can be calculated from the difference between the mass of the initial and final nucleus plus the mass of the এটা एक्चुअली এটা न्यूट्रॉन हबनी एटी प्रिंटिंग मिस्टेक अछि एटा प्रोटॉन हबो ओके सो अकॉर्डिंगली हमर मास जदि आमे हिसाब रे बाहर करिबा ई प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी sp becomes equal to this is the mass of final nucleus this is the mass of proton and this is the mass of initial nucleus so এই দুইটা রু ইয়াকু आमे जदि फेडी दबा ताले इनटू योर c स्क्वायर करले आमे एठी proton separation energy पाइबा यार वैल्यू भी नेगेटिव आसीबो which is indicating that the proton is unbound and the initial nucleus can decay by proton emission okay a spontaneous proton decay jodi dekhiba lifetime ta it is significantly longer than in case of your neutron decay it is around 10 to the power minus 6 second okay since the unbound protons are held inside the nucleus by coulomb barrier ame janichu जे न्यूट्रॉन है चार्जलेस अनचार्ज पार्टिकल however protons are charged particle so that they are holded by your coulomb barrier so that तांको एबे जदि लाइफ टाइम तांकर देखा जिवो एक्चुअली दे हैव ए सिग्निफिकेंटली लॉन्गर लाइफ टाइम ओके इन केस ऑफ योर न्यूट्रॉन डिके ओके जोटा कि 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड रहउची ओके अच्छा आकु बढ़िबा एबे देखो ए जो प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी
ଯେମିତି ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସେପାରେସନ୍ ଏନର୍ଜି ବାହାର କରୁଥିଲା ତାକୁ ୟାକୁ ବି ବାହାର କରିପାରିବା in terms of your excess mass or mass defect. So ଦେଖ ଏଟା ଆସିଗଲା excess mass of the final nucleus, then this is the proton and this is the initial one. Okay, initial nucleus ତାକୁ ଆମେ c square ରେ multiply କଲେ ବି ସେଇ separation energy ପାଇପାରିବା। ଆଉ similarly in terms of your total binding energy ବି ୟାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା simply initial nucleus ର binding energy को ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା final nucleus ର binding energy ରେ। ଆଉ ଏଠି ଯେହେତୁ ତମର ପ୍ରୋଟନ୍ ନମ୍ବର ବା ଏଟମିକ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ମାସ୍ ନମ୍ବର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି, ସୋ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଏଠି ଜେଡ୍ ଏଫ୍ ଆଉ ଏ ଏଫ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର ରିଲେସନ୍ଟା ଆସିବ ଫର୍ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ସେପାରେସନ୍ ଏନର୍ଜି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି। ଓକେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏବେ ଏଇ ପ୍ରୋଟନ୍ ସେପାରେସନ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ବି ଆମେ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଗ୍ରାଫ୍ ୟାକୁ ପ୍ଲଟ୍ କରିପାରିବା ବାଇ ଟେକିଂ ଦ ପ୍ରୋଟନ୍ ନମ୍ବର। ଏଠି ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଏଟା n ହେବନି, ଏଟା z ହେବ ପ୍ରୋଟନ୍ ନମ୍ବର along the x axis and the proton separation energy sp along the y axis in terms of mev। okay, ଏଟା n equal to 82, n equal to 82 आइसोटोन ପାଇଁ ନେଇଛୁ ଆମେ। ଓକେ, ସୋ ୟାକୁ ଆମେ ଲେଡ୍ ଭଳିଆ ବି ଟ୍ରିଟ୍ କରିପାରିବା। ସୋ ୟାର ଗ୍ରାଫଟା ଦେଖ এই ହିସାବରେ ଆସୁଛି। ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହୁଛି। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଫିକାଲି ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ପାଉଛୁ decrease କରୁଛି as the neutron number is increasing. So note that the proton separation energy is larger for the isotones with even number of protons. Okay, जो जगह प्रोटॉन संख्या even अच्छी ताले सही जगह proton separation energy larger, so that in other words that nucleus is a stable nucleus. Okay, even number of protons अच्छी माने even nuclei is a stable nuclei as compared to the nuclei having odd number of protons. Okay, so this indicates that the paired proton result in significantly around 20% or more larger total binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon भी जेतोला हमें पढ़ुतिला सेथिरे भी हमें देखुतिला जे the nuclei having even number of protons, or better I should say even number of nucleons, those nuclei are most stable. Okay, अच्छा ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ନୋଟ୍ କର, there is a step like change in the proton separation energy around your atomic number z equal to 50. So देखो as you can see in this graph for z equal to 50 এই জায়গাରେ ଆମର step like change ହେଉଛି ଏଠି। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି discontinuous ଆସିଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜଟା ଆସିଲା ସେ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ such discontinuity is indicating the closing of the proton cells. Okay, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ନୋଟ୍ କର, the value of this proton separation energy is less than 0 in case of your Lu-153 at z equal to 71. Okay, at z equal to 71 Lu-153 re this proton separation energy is negative. Okay, so this isotopes lives for a very short time and thanks to the Coulomb barrier which is hindering the proton decay for this case. Okay, so as you can see in this graph for z equal to 71 माने এই জায়গারে এটা দেখো এটা this is the zero mark, so zero mark ରୁ এটা ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଶେଷରେ ଏହି ସେପାରେସନ୍ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଟନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ତାକୁ again in terms of your equation ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, this is the initial nucleus, this is the final one along with the proton which is being separated. ଆଉ in terms of binding energy ମଧ୍ୟ এই ହିସାବରେ ଆମର ଆସିବ। ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲା। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ ପାଇଁ ବି ସେପାରେସନ୍ ଏନର୍ଜି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ସିମିଲାରଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନିସିଆଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଫାଇନାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରୁ କେବଳ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ ହିସାବରେ, ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ ମିନ୍ସ ଅ ଡବଲି ଚାର୍ଜଡ୍ ହିଲିୟମ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର एटॉमिक नंबर 2 कमिब आ मास नंबर 4 कमिब। ओके, सो এই হিসাবে এটা তোমার আলফা পার্টিকল which is the doubly charged helium nucleus এটা বাহারକୁ পড়ে আসিলা। accordingly the separation energy for alpha particle is this much. This is the binding energy initial nucleus ro, this is the binding energy final nucleus ro, and this is the binding energy of the helium nucleus or alpha particle. Okay, Thank you.